going to cover the topic qualitative analysis of basic radicals. In qualitative analysis of basic radicals, we have the following objectives. In this lesson, we learn the following points. A systematic method for practically determining the basic elemental cationic species in a sample. That's the part that I am going to cover. Qualitative analysis of inorganic species is a part of analytical chemistry that deals with detecting the constituents of a solution, cations, anions, complex cations, anions, etc. The principles of qualitative analysis and the usage of mainly visual clues to figure out the cations in a given sample. You see, the skill involved in qualitative analysis is drawing correct inferences from observations that are mainly visual, but also sometimes depending upon the reactions, we have some other inferences depending upon other observations also. The prerequisites. What are the informations that I presume and we need to know before understanding the content of this lesson? The following information is assumed to be known beforehand for a complete understanding and problem solving in this chapter. Elementary knowledge of the effect of heat on common chemicals, nitrates, oxides, ammonium salts, with dichromate, nitrite. This is all covered in elementary chemistry courses, and this must be known in order to correctly interpret the effects of heat on various commonly available chemicals. Elementary chemistry, in particular combustion in oxygen or other gases, hydrolysis of salts with nitrides, the knowledge of colors of common salts and oxides, along with visual changes on heating them. As you might know, zinc oxide, it is a metallic oxide. On heating, the visual change we observe is that it is white when cold and yellow when hot. Similarly, the effect of heat on Pb3O4 red lead, PbO2 and HgO and many other oxides must be known. A particular instance is, which will be required in the problem solving that we do in this lesson, the chromyl chloride test. Although classically it is a test for detecting the presence of chloride ions in a solution, it is also particularly valuable in detecting the presence of chromium, because after all the gas that we use in this test contains chromium. So, I will be talking a little bit more about chromyl chloride test in the course of this discussion also. The basic overview of what we are going to cover. For example, we have a solution of several cations, suppose around 25 cations. So, we need a particular algorithm for going through the analysis of these cations. We need to devise a systematic method of performing the least number of operations and figuring out what are the constituent cations in that solution. So, we have devised one such scheme, and that is known as group analysis. What is group analysis? In group analysis, we rely on precipitation equilibria mainly to detect the various cations present in the sample. Group analysis is basically a separation of various cations in many groups which have a common property, the property being precipitation selectively under a given set of conditions. For example, the group 1 precipitates consist of lead chloride, mercurous chloride, silver chloride. These are the precipitates. The cations are lead 2 plus, mercurous and Ag plus. These are grouped in the first group precipitates because on adding a solution of dilute HCl to their solution, white precipitates of their chlorides appear. There are other groups including group 2, 3, 4, 5, 6. In group 2, we have Hg2 plus, lead 2 plus, copper 2 plus, cadmium 2 plus, as well as tin 2 plus and 4 plus. We will be dealing with these cations. In group 3, we have ferric, chromium and aluminum. Group 4 has zinc 2 plus, manganese 2 plus, cobalt 2 plus and nickel 2 plus, while group 5 has barium, calcium and strontium each 2 plus. Group 6 we shall be covering ammonium cation. So, the basic cationic group analysis in wet media, this is the basic principle of this group analysis. Apart from these, there are dry tests and also confirmatory tests. In the course of this discussion, we will be covering them as well. Let us start with this group analysis. The first step that we do to an unknown sample is add group 1 reagent to it in order to detect the cations if present in group 1. This order is particularly important for two reasons. Firstly, the group reagents of later groups may have the potential of giving precipitates with any of the cations of previous groups.
For example, as you shall see, in group 2, the group reagent is acidic solution with hydrogen sulfide reagent. This will give precipitates of all metallic cations in group 2 because of their low solubilities. But if somebody did not carry out group 1 analysis and separated out the cations of group 1 in the form of their precipitates out of the solution, for example Ag+, that will also give its sulfide precipitate under a similar set of conditions. So therefore, this order is important systematically also. Another practical reason why this order is important is that this order is useful practically. I mean, when you add the reagents for group 2, you add H2S reagent in a solution that has already been acidified when you performed group 1 analysis. So the method is extremely economical. अब हम बात करते हैं lead 2+ के बारे में. अब हम सभी कैटायंस जिनके बारे में हमने बात किया था उनको डिटेल में कवर करेंगे. लेड 2+ की बात करते हैं. लेड 2+ में फॉर योर कन्वीनियंस मैंने सारे रिएजेंट्स को टॉप स्लाइड्स पे लिख दिए हैं. सो फॉर लेड 2+ वील यूज दीज पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिएजेंट्स. क्योंकि लेड 2+ डाइल्यूट HCl से प्रेसिपिटेट देता है इसलिए वो ग्रुप 1 में है. सो वी हैव दिस फंडामेंटल इक्वेशन lead 2+ plus 2Cl minus gives precipitate of PbCl2, which is a white precipitate. One point to be noted is that if we use conc or concentrated HCl, this precipitate dissolves into solution. Solution में चला जाता है फॉर्म में PbCl4 2- के. This is soluble. इसके बाद PbCl2 जो प्रेसिपिटेट आया था वो सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन में डिसअपियर कर जाता है. Pb2+ के और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस भी हैं. Pb2+ जब एल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड जैसे किसी भी स्ट्रॉन्ग एल्कली से रिएक्ट करता है तो वह PbOH होल ट्वाइस का वाइट प्रेसिपिटेट देता है. सिमिलरली अमोनिया सॉल्यूशन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हाइड्रोक्सिल आयंस लिबरेट करता है तो उस केस में भी हमें सेम प्रेसिपिटेट मिलेगा. अगर एक्सेस ऑफ OH- प्रेजेंट हो यानी सॉल्यूशन और भी बेसिक कर दिया जाए तब ये लेड के एम्फोटेरिक नेचर यानी एसिड्स और बेसिस के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी को हाईलाइट करते हुए टेट्राहाइड्रोक्सोप्लम्बेट इस आयन में चला जाकर सॉल्यूशन में वापस डिसॉल्व हो जाएगा. अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली या कोई भी एल्कली के साथ ये रिएक्शन सीक्वेंस फॉलो होगा. क्रोमेट्स और आयोडाइड्स के साथ लेड के वेरी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं, उन्हें हम देखते हैं. लेड 2+ के सॉल्यूशन में अगर हम लोग किसी भी सॉल्युबल क्रोमेट फॉर एग्जांपल पोटेशियम क्रोमेट आयंस को इंट्रोड्यूस करेंगे तो PbCrO4 का येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. PbCrO4 प्रेसिपिटेट की कुछ खास बातें हैं. PbCrO4 वापस डिसॉल्व कर जाएगा आइदर स्ट्रांगली एसिडिक और स्ट्रांगली बेसिक सॉल्यूशन में. इक्वेशंस कुछ इस तरह होंगे. PbCrO4 इन एसिडिक सॉल्यूशन देगा वापस लेड 2+ goes back into solution plus dichromate ion. Balancing is trivial. Similarly, PbCrO4 alkaline solution में देगा PbOH whole 4 2- plus CrO4-. Something to be noted is that ये जो species है this is orange, तो solution जो obtain होगा वो orange होगा, जबकि basic solution में क्रोमेट का yellow solution obtain होगा. Also, lead 2+ reacts with iodide ions to form PbI2
येलो प्रेसिपिटेट। PbI2 हॉट वाटर में स्लाइटली सॉल्यूबल है, सो बॉइलिंग वाटर में ये सॉल्यूशन में वापस डिसॉल्व कर सकता है। सो अगर इसके सॉल्यूशन को बॉयल किया जाए तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, बट वापस कूल करने पे वी गेट PbI2 के क्रिस्टल्स, जिनको गोल्डन स्पैंगल्स या प्लेट्स के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। Ag+. The second member of group 1 analysis is silver. Again, since it is a member of group 1, we have Ag+ plus Cl- giving a precipitate of AgCl. This is curdy white. जस्ट लाइक लेड, इसमें भी कॉन्क HCl डालने से ये डाइक्लोरो आर्जेंटेट कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में वापस सॉल्यूशन में चला जाएगा। ये कलरलेस सॉल्यूशन। AgCl एक और तरीके से डिसॉल्व करता है, वो है ऐड करने पे अमोनिया सॉल्यूशन। यहाँ भी कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन होगा और डायएमीन सिल्वर प्लस आयन का फॉर्मेशन होगा। अब ये वापस कलरलेस सॉल्यूशन में चला गया। इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम कई जगह यूज भी करते हैं। इनफैक्ट स्लाइटली अल्कलाइन अमोनियम सॉल्यूशन से डायमीन सिल्वर प्लस कैटायन के सॉल्यूशन को टॉलेंस रिएजेंट कहते हैं। टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट स्पेशली यूजफुल होता है ऑक्सीडाइजेबल सबस्ट्रेट्स को डिटेक्ट करने के लिए। जो भी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट्स इन पर्टिकुलर आराम से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, वो इसके साथ रिएक्ट करते हैं और इसका Ag+ मेटल सेंटर मेटालिक सिल्वर में रिड्यूस हो जाता है। इनफैक्ट Ag+ का सॉल्यूशन खुद भी OH- जो कि आ सकता है एल्कली और एल्कली से आइदर अमोनिया सॉल्यूशन या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, और इससे Ag2O का ब्राउन प्रेसिपिटेट जनरेट करता है। Ag2O का ब्राउन प्रेसिपिटेट। ये Ag2O का ब्राउन प्रेसिपिटेट एक्सेस OH- में डिसॉल्व नहीं करता, बट एडिंग एक्सेस ऑफ अमोनिया, अगेन सेम कॉम्प्लेक्स AgNH3 whole twice, NH3 whole twice, प्लस कॉम्प्लेक्स जनरेट करता है। एक और कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है आयोडाइड के साथ एज वेल एज क्रोमेट के साथ, जस्ट लाइक लेड। Ag+ आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके Agi का प्रेसिपिटेट देता है, जो कि होता है येलो। एक नोटेबल पॉइंट ये है कि सिल्वर सभी हाइलाइट्स के साथ इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट देता है और उनके कलर्स डाउन द ग्रुप येलोइश टिंज लेने लगते हैं। AgCl वाइट होता है, Agbr पेल येलो एंड Agi इज डेफिनेटली येलो इन कलर। Agi does not dissolve in excess ammonia. इसकी कॉम्प्लेक्सेशन नहीं हो पाती है बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल। जबकि स्ट्रॉन्ग लीगेंड्स जैसे कि साइनाइड या फिर थायोसल्फेट इसे कॉम्प्लेक्स करके वापस सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर पाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डाइसायनो आर्जेंटेट
analogous to dichloroargentate, and dithiasulfato-argentate. Moving on to further reagents, Ag plus रिएक्ट करता है क्रोमेट आयन के साथ to give a precipitate of Ag2CrO4 जो कि होता है brick red. This reaction is particularly useful because ये कई reactions, कई important estimation reactions में end point की तरह use होता है. For example, Mohr's determination ऑफ Ag प्लस में हम Ag प्लस की क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कराते हैं और उसमें लिटिल अमाउंट ऑफ क्रोमेट आयन के साथ Ag2CrO4 का प्रेसिपिटेट आता है. इसके इंटेंस रेड कलरेशन की वजह से हम एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर सकते हैं. फर्दर मोर Ag प्लस इनफैक्ट इवन न्यूट्रल HPO4 2 माइनस आयंस के साथ Ag3PO4 सिल्वर फॉस्फेट का येलो प्रेसिपिटेट देता है एंड द सॉल्यूशन टर्न्स एसिडिक. Ag plus reacts with sulfide to give Ag2S even in acidic medium. As you can observe, this was our group reagent for group 2. Silver also gives sulfide precipitate. So this was our discussion on silver. Moving on, Hg22 plus, mercurous ion, another member of group 1. Hg22 plus reacts with chloride to give Hg2Cl2 white precipitate. White. Group analysis reaction. There are some other reactions of Hg22 plus where Hg22 plus reacts with OH minus from an alkali, for example, to give a precipitate of Hg2O, which is black. This Hg2O can undergo further reactions. For example, when this is simply boiled in its supernatant liquid after its precipitation, then this disproportionates to give HgO and Hg. This is grey black and this is reddish. In fact, when Hg2O is reacted with HNO3 dilute, it readily dissolves to give back Hg22 plus in aqueous state. Reaction is trivial. However, the reaction with ammonia solution this time is different from that of an alkali, even in the first step. That means Hg22 plus reacts with NH4OH to give a different precipitate this time. It gives a precipitate of HgO dot Hg NH2 Cl plus Hg plus water. This mercuric oxide, mercuric amido chloride is a white precipitate. But since it is also precipitated with mercury, which is grey black, because mercury is deposited in form of fine particles, the overall appearance is of a black precipitate, the total appearance. Further reactions of Hg22 plus are that with iodide. Hg22 plus reacts with iodide ions
to give a precipitate of Hg2I2, which is green, but on adding excess of I minus, it forms Hg(I4) 2 minus a complex tetraiodomercurate plus, since this particular Hg is in 2 plus, so it must have disproportionated, and indeed it forms elemental mercury. Another reaction is that when this is simply heated, it gives again by disproportionation Hg(I2) as well as mercury. This is scarlet colored. This disproportionation happens. In fact, Hg22 plus also gives a precipitate with chromate, just like the preceding members. It reacts with CrO4 2 minus to give a precipitate of Hg2CrO4, which is reddish in color. In fact, this Hg2CrO4 is degraded in alkaline solutions to give back the precipitate of Hg2O that we had obtained in alkaline solutions when introduced to Hg22 plus, gives a black precipitate of Hg2O plus chromate ions. So, these were the reactions of Hg22 plus. Moving further, Hg2 plus. In this manner, we have entered group 2. These were the cations that we discussed of group 1. Group 2, the group reagent, as we have already seen in the overview, is acidic solution with introduction of the reagent hydrogen sulfide. These cations in group 2 have such an insoluble sulfides that even in acidic solutions where the sulfide ion concentration as obtained from dissociation of H2S is minimal, their precipitates appear. So, in going by the placement of mercury in group 2, we can conclude this general reaction that Hg2 plus will react with sulfide ion to give HgS, a black precipitate. HgS is one of the most insoluble organic compounds known. So, therefore, even though the other members of group 2 dissolve in hot medium concentrated nitric acid, this particular precipitate does not. To dissolve HgS into solution for further analysis, we have to dissolve HgS in aqua regia, which is a mixture of conc HCl and conc HNO3 in the ratio 3:1. So, this reacts with HCl plus nitric acid to give Hg2 plus as it goes into the solution, plus NO gas plus a precipitate of sulfur plus water. So, although the complete solid did not dissolve into the solution, we do have Hg2 plus into our solution, which we can use for further analysis. Some characteristic reactions of Hg2 plus are Hg2 plus, इसमें अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड या अल्कलाइन हाइड्रोक्सिल आयंस डालें तो इसमें HgO का प्रेसिपिटेट आता है जो कि होता है येलो। जबकि आपको याद हो Hg2 प्लस यानी मर्क्यूरस में हमने ये देखा था कि जब Hg2O को हम लोग हीट करते हैं तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है और फॉर्म करता है HgO जो कि होता है रेडिश। ये ऐसा इसलिए है बिकॉज HgO दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, येलो एज वेल एज रेड। जब Hg2 प्लस को अल्कलाइन सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट करते हैं तो वो येलो फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। अदरवाइज जब हमने मर्क्यूरस ऑक्साइड को हीट किया था, इनफैक्ट अगर हम लोग सिंपली मरकरी को ऑक्सीजन में बर्न भी करते हैं जब कंबशन होता है तब भी जो HgO बनता है, इवन सनलाइट में भी मरकरी को अगर हम लोग ऑक्सीजन गैस में जो टेक्निक पहली बार जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई थी HgO से डिकम्पोजिशन करके, देन ऑल्सो द HgO फॉर्म्ड इज रेडिश, but here the HgO, the mercuric oxide precipitate, is yellow. Another reaction that is typical of Hg2 plus is that it reacts with iodide, iodide के साथ react करके precipitate देता है Hgi2 का, जो हमने देखा था scarlet होता है, but excess of I minus
में ये डिसॉल्व हो जाता है वापस और फॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स टेट्रा आयोडो मर्क्यूरेट कलरलेस सॉल्यूशन। एक टिपिकल रिएक्शन और है, Hg2+ को हम रिएक्ट करा रहे हैं SnCl2 सॉल्यूशन के साथ। जैसा हम जानते हैं Sn2+ का स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होता है Sn4+ पे जाने का, इट इज़ अ वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस Hg2+ को भी ये रिड्यूस कर देता है Hg2+ में, और साथ साथ Sn4+ में वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये बेसिकली एक रेडॉक्स चेंज है। इसके बाद अगर सपोज ये Hg2+ Cl- के फॉर्म में था, HgCl2 के फॉर्म में था, देन ये Hg2Cl2 का वाइट प्रेसिपिटेट जनरेट करेगा, which is insoluble as we have seen because it lies in group 1. Furthermore, अगर हम लोग इसमें और SnCl2 डालें, that is excess of SnCl2 में, ये फिर से रिड्यूस होकर मेटालिक मर्करी के स्टेज तक रिड्यूस हो जाएगा। Hg2+ का एक कॉपर फॉइल टेस्ट है, दैट इज इफ वी टेक अ सॉल्यूशन ऑफ Hg2+ और उसे कॉपर के फॉइल पे रख दे तो उस पे ग्रे डिपॉजिट आ जाता है। वो ग्रे डिपॉजिट है मेटालिक एलिमेंटल मर्करी का, और कॉपर 2+ सॉल्यूशन में आ जाता है। दिस रिएक्शन इज पर्टिकुलरली वैल्यूएबल। क्यों? इससे पता चल रहा है कि हमारे सैंपल में एक ऐसा मेटल है जो कि कॉपर से रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है। तो अब हमारे पास कुछ ही कैटायंस बचे, और फिर एक कंफर्मेटरी टेस्ट से हम लोग Hg2+ की डिटेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। और एक और पर्टिकुलर टेस्ट है, जब Hg2+ इस कॉम्प्लेक्स आयन टेट्राथायोसायनाटो कोबाल्टेट से रिएक्ट करता है तो ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कोबाल्ट टेट्राथायोसायनाटो मर्क्यूरेट के फॉर्म होते हैं। As you can see, the central metal ion is mercury and not cobalt. So these were the very typical reactions of mercury जो हम लोग mercury 2+ के presence को detect करने के लिए use कर सकते हैं। So till now we have finished completely with the principles of qualitative analysis, the basic overview of cationic qualitative analysis, and we have also completed the complete discussion on group 1 qualitative analysis, that is the chemistry of lead 2+, Ag+ and Hg2+ as pertains to their identification in a given sample. We proceed further with group 2 and complete it